Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, everyone. How are you all? Good evening, ma'am. Good evening. So, did you all practice for that question which I gave you yesterday? Do the advantages outweigh the disadvantages? Yes. Yes, ma'am. We try. Yes, ma'am. And did you submit your answers on the application? I got How, ma'am? 5.5. Today I Yes. yeah. One by one, please. Yes, Raman? Ma'am, I was try, but not now submit. Today I Mhm. will get on application. Okay. And what about Jyoti? You I tried, have right? submitted. Mm-hmm. Yes, ma'am. 5.5. Oh, I why got. it was so low? But I don't know, ma'am. I don't think पता नहीं समझ में नहीं आया मुझे क्या था. I don't understand. Like I have tried, but Mm-hmm. Did you check your mistakes? yes, Okay. So the what task was it? response is okay. Mhm. Um, I think some vocabulary things Okay. I need to improve. Yes. Okay. So what we will do today, we will talk about the tips also, like how to score higher in your writing band. And apart from this, we will talk about the last topic, that is double question essay. Okay. So let's start. Yes, ma'am. Okay. One candidate, Ranjeet Kaur. Hello. Yes, Ranjeet. Can you please introduce yourself? Yes, ma'am. Mm-hmm. So my name is Ranjit Kaur. Mm-hmm. Basically, I am from Chandigarh, but currently I am living in Gurgaon with my family. Mm-hmm. And if I talk about my education qualification, Mm-hmm. I had done my BCom along with B.Ed. Okay, great. And now I am preparing for the IELTS exam, And you're preparing for academic or GT? GT. Okay. And how soon you want to give your exam? Probably next month Okay. in the month of June. Yes. Okay. Okay, great. So you joined us lately, right? We have already covered reading sessions and speaking also. Today is the Okay. last session of writing module. From tomorrow onwards, we will start with the listening part. So you can Okay. re-watch all those sessions in our application. ठीक है, Okay. आप Okay. एप्लीकेशन पे सारे सेशंस देख सकते हो दोबारा से. All the Okay. 9 class recordings are available there. Okay, ma'am. Okay, so let's quickly start with double question essay. Can anyone give me any idea what is double question essay? We did talk about it in the introduction part. Yes. What is Yeah, two part? in that question, yes, two parts are there, and we have to answer on those two parts, Hmm. and in our introduction also. Yes. So double question essay is also called as double side essay or two side essay or two part question essay. Now, in this question, what happen is you will be given several statements, a one statement and two questions. These essays, they are slightly difficult when you compare to any other type because they will give you the direct task, right? And they will give you some general questions also, and you have to answer those questions. If they give you three questions, then you have to make three separate paragraphs. For every question, you have to write a different paragraph. Now, how you're going to plan this direct question essay is read the questions given, focus on each question separately, figure out an answer for each question separately,
These answers, they have a main point, supporting points to your point, and recheck if all the questions are answered before you begin writing the answer. Now, how double question looks like? Now, suppose if you have water is essential for living. What are the causes for scarcity of water? How can you save or conserve water? So there is a one line statement and then you have two questions. So when you have these two questions, it means this is double question essay. There are two parts of the question and you have to answer those parts. Now, what are the tips for direct question essays? Spend some time pondering on the question and planning the answer before you actually start writing with it. Now, can you give me any example of direct question essay? Do you came across, because you people are also practicing from months? Yes. Have you came across any direct question essay or two-part question essay? No, ma'am. Right now, No. I didn't. In the Yes. application, have you explored the application and you saw any question? Anyone else? Now suppose your question can be, in some countries, there is a growing trend of banning smoking in public places. What should be the approach to stop this? So this is only one question, but this is called as double question essay. So you have to talk about approaches to stop this. When directly you have question ना, जब भी आपके पास एक statement हो, एक topic of statement हो, and then you have questions, इसका मतलब वो क्या है? Direct question essay. आपको आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे दिखता है या कैसे आप उसे आइडेंटिफाई करने वाले हो. Let me give you more example. Now, suppose you have this question. What do you understand by happiness? How can people achieve it? Can money or material belongings help a person become happy? So what do you understand by happiness? This is one question. How can people achieve it? This is second question. Can money or material belongings help a person become happy? This is third question. So there are three parts to answer in this question. Getting? Yes, please. Tell me, are you able to identify direct question or not? Yes, anyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let me give you one more example. There is too much news and information circulating on the internet nowadays. Is the information on internet reliable? This is one question. How can it be controlled? This is second question. So this is direct question essay, double question essay. क्लियर? जब आपके पास स्टेटमेंट हो एंड देन स्टेटमेंट के साथ टू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो क्या? Sorry, ma'am, your screen is screen. Yes, what happened? Screen, ma'am. So just screen is not visible. That you Is talking my about. screen not visible to anyone? Ma'am, it's visible. The screen is talking about tips for direct question essay. Ma'am, it's visible. So let's talk about some of the tips. You have to spend some time focusing on the question. See what your question demands, what is the type of question, identify it, and then talk about how many parts you have to answer, right? Follow the word count. That means no less than 250. Here you need not to agree or disagree. Here you have to be little formal with your tone and you have to answer those questions. So follow our content structure. Like you have to start with introduction paragraph
and then two separate paragraphs for each of the question which is asked in the topic. जो भी आपका क्वेश्चन टॉपिक है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसको एक सेपरेट पैराग्राफ्स में लिखोगे एंड देन योर कंक्लूजन पैराग्राफ. Reply to the question with your answer and its reason in each of the body paragraph. So अगर तीन क्वेश्चन है तो आप तीन बॉडी पैराग्राफ फ्रेम करोगे, अगर दो क्वेश्चन है तो आप दो बॉडी पैराग्राफ फ्रेम करोगे. Clear? See the structure. Introduction paragraph for direct question essay. Always start this paragraph with paraphrasing the question. Always, right? And give introduction about what you are going to discuss in the body paragraphs. आप क्या discuss करने वाले? You're talking about smoking, banning the smoking, or you're talking about water conservation, or you're talking about internet news. जो भी आपका टॉपिक है आप क्या करोगे इंट्रोडक्शन में वो बताओगे कि आप क्या लिखने वाले हो. Some approaches to conserve water. Then body paragraph 1 will talk about the situation that question asked for. That means जो हमारा first question था उसको आप कहाँ आंसर करोगे बॉडी पैराग्राफ 1 में. And if required we will give example also. Second body paragraph will talk about second question. That means the next question and any example if you can do. If you have third question, you will frame the third body paragraph. And then comes your conclusion point. Conclusion means always 2 to 3 statements where you will summarize all the main points. Any recommendation, you can make it. Otherwise, you can just summarize. Please have a look at this question. मैम Yes. अगर 3 क्वेश्चन हो और अपने फिर एक पैराग्राफ में 2 कर दें और एक में 1 कर दें, ऐसे नहीं हो सकता? Do not do it. आप separately लिखो अगर 3 questions are there. Do not mix. Now see here. In today's world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters, and writers. What can art tell us about life that science and technology cannot? So this is one question कि art हमें क्या बताता है जो science and technology हमें नहीं बताता. So this is direct question essay. ये direct question essay. इसको आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी सब टॉपिक्स में आप एग्री और डिसएग्री या व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट आर योर व्यूज को देख के आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है, कॉज एंड इफेक्ट लिखा है तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लोगे. बट यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं होता कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे है, कोई ऐसे पर्टिकुलर कीवर्ड्स नहीं होते यहाँ पे. So you have to read and then you have to identify कि ये direct question है जहाँ पे सिर्फ आपसे questions पूछे गए. See the second one. A number of different medical traditions are now widely known and used. Western medicines like drug surgery, herbal medicines, acupuncture, homeopathy, and so on. How important is the patient's mental attitude towards his/her treatment in determining the effectiveness of treatment? So this is one question here. You have to talk about it. And see, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक पैराग्राफ लिखोगे. The reasons will be 2 or more. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही क्वेश्चन है, यहाँ 2 क्वेश्चन नहीं है. मैम जैसे मेन हम किस पे लिखेंगे, मतलब क्या हमारा मेन उसमें व्हाट इज द मेन आइडिया टू राइट द पैराग्राफ्स लाइक Yes, please. हियर दे सेड द होम्योपैथिक एंड द हर्बल मेडिसिन्स, तो व्हाट शुड बी राइट लाइक. देखो अब हमारा टॉपिक क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट मेडिकल ट्रेडिशंस आर नाउ वाइडली नोन एंड यूज्ड. डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं जैसे कि वेस्टर्न मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर एंड होम्योपैथी. ये सारे उन्होंने मेडिकल ट्रेडिशंस बताए. हाउ इम्पोर्टेंट इज द पेशेंट्स मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज और ट्रीटमेंट.
पेशेंट का मेंटल एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है उसके ट्रीटमेंट. सम पीपल, कुछ लोगों को ये बिलीव होता है कि नहीं वेस्टर्न मेडिसिन आर गुड इनफ. सम पीपल बिलीव कि नहीं होम्योपैथी इज गुड इनफ. तो कितना ट्रीटमेंट जरूरी है उसके इफेक्टिवनेस के लिए. क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वेस्टर्न मेडिसिन ही जल्दी से क्योर करेगी. तो वो माइंडसेट जो है, वो मेंटल एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं. और आपको इसके लिए 2 बॉडी पैराग्राफ ही मेंटेन करने हैं. आप सिंगल बॉडी पैराग्राफ में इसका आंसर नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक 1 क्वेश्चन गिवन है आपको. एक्सक्यूज मी मैम. यस रंजीत. हाँ जी मैम. डू वी हैव टू राइट द मीन्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेस्टर्न एंड एज वेल एज द होम्योपैथी इन द सेम पैराग्राफ? यू हैव टू Means राइट. in one यस. means in one paragraph we have to write about Western medicine, and in the other there is the homeopathy medicine. नाउ Means इसमें advantages और disadvantages दोनों लिखनी है? see, it's not about advantages or disadvantages. It is about patient's mental attitude. कि लोगों का mental attitude कैसा होता है. अब कुछ sort of people होते हैं जो western medicines को prefer करते हैं, right? Because they will cure you within couple of minutes or hours. ये mental Okay. attitude है लोगों का. But कुछ लोगों का mental attitude क्या होता है कि no, it's gonna harm you, है ना. Yes ma'am. Homeopathy or herbal medicine will save my life for a longer span. So आपको ये चीजें लिखनी है यहाँ पे कि Okay. कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि आप तभी उस चीज से ठीक हो पाते हो उसके इफेक्टिवनेस के लिए. Okay. I will show you. Just start thinking about first question. First question क्या है हमारा? Let's discuss the first one. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं कि in today's world of advanced science and technology, we still greatly value our artists, such as musicians, painters, and writers. Now, what can art tell us about life that science and technology cannot? अब लाइफ के बारे में आर्ट हमें क्या बताता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं बताता? हम वैल्यू करते हैं किन आर्टिस्ट को? म्यूजिशियंस को, पेंटर्स को, राइटर्स को. So, any ideas? Ma'am, because they have a experience, own experience they give, and the musician also they have own experience, like they have a 40 years experience or 20 years. That technology did not tell properly, like जैसे म्यूजिशियन हमें बहुत अच्छे से समझा सकता है, लाइक अगर सामने है, और पेंटर्स बहुत सुंदर पेंटिंग कर सकता है ड्यू टू देयर लाइक, एंड राइटर बहुत अच्छा लिख सकता And they है. also deliver a kind of a strong message with their painting. बट जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हैं. Writers also with their writings. If person is very good with reading, and some person like they have a habit of reading or writing the books. So they tell you about life, philosophy, and everything, which science and technology cannot. Right? Any another idea? And even if you talk about the beauty of culture, it can only be described by art, right? Have you seen outside roads where there are so much art, architecture, the paintings going on? So who's gonna describe that? It's only because of painters, artists, right? So in the first question, we have to write 2 paragraphs. Yes, two Like paragraphs. in one paragraph, we have to mention the musician, painter, and writer. Second And also, other one, second also the अच्छा, thing you have to talk about. जैसे हम okay. agree and disagree में दोनों ideas लिखते हैं ना, Mm-hmm. so you have to write कि what forms So of art, like traditional music हो या traditional culture हो, so they are all like ancient paintings है, तो ये सब कैसे describe होता है? Through artists. Science and technology cannot describe these things.
right? तो साइंस और टेक्नोलॉजी पे हमें कोई भी पैराग्राफ नहीं लिखना है? No, no, no. We will not ओके। write. वो नहीं लिखना. We are just making a contrast here. एक हम contrast कर रहे हैं, लेकिन we will talk about, मतलब हम सिर्फ only introduction में science and technology को mention कर सकते हैं, but then afterwards we will talk about how it is, like how art is telling us about life. Then हम conclusion में again ये mention करेंगे little bit about science and technology, but we will not mention in the paragraph, ओके ओके मैम। right? Have a look at the sample answer also. So, in this modern era of non-stop scientific and technological advancement, artists still command profound respect from people worldwide. There are number of things about life that art can teach us that science and technology fail to do so. Now, number of things means आप अपने paragraph, upcoming paragraphs में number of things बताने वाले हो. So that is why it is mentioned in the introduction paragraph. कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आर्ट हमें बताता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं बताता. So many forms of art like literature can deliver messages about appreciation of what we have in life. Hundreds of literacy works depict misery, misfortune, sorrow that still exist in many places. So कैसे आर्ट हमें ये सब चीजें बता रहा है? You have to talk about in the first body paragraph also and second also. See, cherish the beauty of culture, spiritual lives. तो ये हमें कैसे पता चलती है? You can give any example. Spiritual writings also. तो ये हमें कैसे पता लगती है? थ्रू द आर्ट, थ्रू द आर्टिस्ट ओनली. आर्ट का मतलब सिर्फ पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स नहीं होता, राइट? दिस इज मच मोर. ट्रेडिशनल म्यूजिक आल्सो, कल्चर आल्सो, दे ऑल कम्स इन आर्ट. There are various forms of art. And see, it is only mentioned in the last paragraph. Although science and technology advance our understanding of all the things and better our life, arts can touch us to much deeper extent and help us value what we have and remind us of the significance of our culture. Got it? Clear? Yes. Okay, now let's Yes, look ma'am. at second one. It was about medicines. So first paragraph, health is a crucial thing for every single person in the world. When suffered an illness, medication is the direct solution the people take. Nowadays, this is only till take, this is a background statement. It is not mandatory. Nowadays, there have been a big number of medical traditions widely recognized and applied like Western medicines, herbal medicines, acupuncture, homeopathy, and many others. Regardless the classification of that medical treatment, patient's mental attitude on a treatment is regarding one of the key. है ना? It depends. आप उसी डॉक्टर के पास जाते हो जिसपे आपका मेंटल एटीट्यूड कहता है कि यस ये मुझे क्योर करेगा, राइट? कैन इट बी कि आपको अगर अगर आपका मेंटल एटीट्यूड ये कहता है कि नहीं मैं वेस्टर्न मेडिसिन की जगह हर्बल मेडिसिन करूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड कि आप कैसे ठीक होगे. So this essay aims to investigate several reasons which base the importance of mental attitude. So किन चीजों पे वो based है? Psychologists often say what you think, what you be. What I mean is whatever kind of medical treatment we use when we get sick, our trust on the effectiveness of particular treatment determine its result. I think this is the main reason why someone who is not successful to remove his or her pain by consuming a modern pill suddenly feeling better after joining an acupuncture practice, right? तो कुछ लोगों को अगर लगता है कि नहीं एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस से ही मेरा पेन ठीक होगा, मॉडर्न कोई भी मैं मेडिसिन ले लूं उससे ठीक नहीं होगा. So it is all mindset. Probably he or she puts trust more on the acupuncture rather than on the ingredients of pill he consumes. Second,
कंजर्वेटिव पेशेंट्स लाइक मोस्ट people in my village, उनको क्या रहता है, they get healthy sooner if they cure it with traditional medicines, है ना, home remedies ले लेते हैं. तो जो माइंडसेट जिसका जैसा है वो वैसे मेडिसिन लेते हैं. Modern people like citizens in the big cities, they hardly feel any effect by using such kind of treatment. वो home remedies कभी नहीं लेते, उनको होता है कि डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन लेके आओ and then you will be fine. In contrast, they feel their illness can be released more quickly by consuming modern pills or other kind of modern medicines. So it is due to the level of trust or mental attitude they put on each kind of medication. Clear? At reading once आपको ये लगा होगा कि ये ऐसे टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी जेंटल. अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो, देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर वेरी इजीली. Okay? Clear? Yes, ma'am. Sure? Any doubt in this? Topics are always common. You just need to understand the topic. At least 1 minute or 2 minutes question को read करने में और उसे analyze करने में लगाया करो. Devote your 2 minutes in understanding the question. अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ आया, then you will not be able to write it. You will be going to the irrelevant answer. आप irrelevant answer लिख दो. Right? So let's start with tips part. Yes, everyone, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we'll talk about some tips so that you can have your higher band score. The most important tip is study the assessment criteria. How many of you know about the assessment criteria for task 1 and task 2? Can anyone tell me about task 1 and task 2? हम असेसमेंट क्राइटेरिया में तो हम लोग vocabulary, task response and cohesion Yes. and grammar Yes. and spellings, ये सब चेक करते हैं असेसमेंट में. Yes. So assessment criteria means your marking criteria, how your writing is going to be evaluated. You know that your writing test can be a challenging task for you because you have to write, okay? And you have to write according to the parameters. The examiners, they never judge your ideas. आपके ideas को कभी judge नहीं किया जाता कि आपने ये point of view क्यों लिखा है और ये क्यों नहीं लिखा. They never judge it. They evaluate your skills according to the 4 parameters: task achievement, task response for the task 2, coherence and cohesion, grammatical range and accuracy, and lexical resources. Right? So, are you all aware of what task achievement is? What task response is? Yes, ma'am. Anyone who does not know about what task achievement and what task response is, I have explained several times. Right? Second tip is you have to plan your time. Now, how do you plan your time? Tell me. 40 minutes. Do you complete your writing task in 40 minutes or do you devote more than this? Whenever you came across any essay topic and you're going to write about it, how do you write? Yes. Ma'am, first of all, Slowly. First 5 minute, ma'am, check statement and think about it. Hmm. Then write. Then write for how many minutes? 20 to 25 minutes. Mm-hmm. Then recheck. So, Last 5 minutes. okay. And what about you, Jyoti? You were saying something? yes, ma'am. The introduction part, first of all, we read the question properly in 1 to 2 minutes, and the prepare the introduction 3 to 5 minutes, Hmm. and paragraph 1 and 2, like
10 minutes or 12 minutes we can uh, spend, and the last 5 minutes on confusion. Okay, so where comes the planning? Planning कब करते हो कि पैरा 1 में क्या लिखना है, पैरा 2 में क्या लिखना है? See, मैम हम्म, जब क्वेश्चन रीड करते हैं उसके बाद, जब हम क्वेश्चन रीड करने के बाद ही प्लानिंग करते हैं कि अब हमें पैराग्राफ 1 और 2 में क्या लिखना है। devote at least 10 to 12 minutes in planning of your essay. 10 to 12 minutes. Why? Because 1 to 2 minutes are good enough to read and understand the question. है ना, सिर्फ 1 या 2 मिनट ही आपको लगता है क्वेश्चन को रीड करने में, आइडेंटिफाई करने में कि ये कौन सा क्वेश्चन टाइप है और आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट 10 मिनट्स इसीलिए डिवोट करो कि आपको लिखना क्या है, आपकी पैराफ्रेजिंग क्या होगी, आपके की आइडियाज क्या होंगे, सपोर्ट करने के लिए आइडियाज क्या लिखोगे, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ताकि नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स में आप कंप्लीट राइटिंग करो एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग नाउ, बिकॉज आप वो स्टार्टिंग के 10-12 मिनट्स में ऑलरेडी कर चुके हो। ऑलवेज प्लान योर एसे फर्स्ट एंड देन स्टार्ट राइटिंग। अगर आप वाइल राइटिंग प्लानिंग करोगे यू वोंट बी एबल टू राइट, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। So once you start reading the question, next 10 minutes, complete planning. This is the first point I'm going to write about. This is the second point I will explain about. Right? Because you know that task 2 is of more weightage than task 1. So please plan it accordingly. वहां पे आपके पास 20 minutes है 150 words लिखने के लिए, और यहाँ पे आपके पास 40 minutes है 250 words लिखने के लिए. So please plan your time. Tip number 3, read the task outline twice. अब आपका टास्क क्या है, आपका क्वेश्चन है क्या, फुल्ली अंडरस्टैंड करो कि टास्क आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपको क्या लिखना है। आपने आइडेंटिफाई करा कि ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ओ सॉरी ये आउटवे का क्वेश्चन है, राइट। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आउटवे के क्वेश्चन में दैट मीन्स आपको फुल्ली एड्रेस करना है कि एडवांटेजेस ज्यादा है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। सो फुल्ली एड्रेस करने के लिए इफ यू बिलीव एडवांटेजेस आर मोर, आप 3 एडवांटेज लिखोगे एंड 2 डिसएडवांटेज लिखोगे। अगर आपने ये चीज मिस कर दी आउटवे के क्वेश्चन में, आपने दोनों को 50-50 लिख दिया, इट मीन्स आपने फुल्ली एड्रेस नहीं करा ऑल पार्ट्स को। सपोज आपके पास डबल क्वेश्चन ऐसे है, 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे, आपने एक को राइट डाउन कर दिया एंड सेकंड को नहीं करा, देन दैट मीन्स आपने फुल्ली एड्रेस नहीं करा, राइट। सो शो दैट यू आर डेवलपिंग योर रिस्पॉन्स, आप रेलेवेंट आंसर लिख रहे हो और फुल्ली एड्रेस कर रहे हो। तो जब तक आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे, उसे आउटलाइन नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू राइट इट प्रॉपर्ली। हाईलाइट करो, राइट डाउन करो कि आपको क्या क्या टास्क लिखने हैं, ओके। बिकॉज क्वेश्चन में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। इवन इफ आई टॉक अबाउट टास्क 1, अगर हम जीटी की भी बात करें, लेटर राइटिंग की, तो वहां पे भी आपको डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक ही क्वेश्चन में, एक ही बुलेट पॉइंट में आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने। सो मेक श्योर जब आप रीड कर रहे हो तो उसको फोकस करो कि मुझे इस चीज के बारे में मेंशन करना है। गॉट इट? Tip number 4, draft your answer. Now draft your answer means which I just told you कि जब आप प्लान कर रहे हो अपने आंसर को, तब आप एक ड्राफ्ट बना रहे हो कि this is my key idea 1, this is my topic statement, this is my elaborating points and this is my example. Examiners they look for evidence कि आपने ऑर्गेनाइज करके आइडियाज लिखे हैं या रैंडमली लिखे हैं, वो दिखता है आपकी राइटिंग। So always spend some time planning your answer अगर आपको higher marks achieve करने हैं। Make sure कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे 40 मिनट्स की, 10 to 12 मिनट्स में उसको पूरा ड्राफ्ट करो कि ये 1 टॉपिक मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में कन्वे करना है एंड ये सेकेंड टॉपिक मैंने सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में कन्वे करना है, सो दैट आपके आइडियाज का फ्लो दिखे। कोहेरेंस एंड कोहेजन में you will never lose marks.
और सारी चीजें अगर आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, सारी चीजें एड्रेस करी हैं, तो आपका टास्क अचीवमेंट 7 बैंड से लेस कभी भी नहीं जाए। बट अगर आप एड्रेस नहीं करोगे उसे और इररेलेवेंट आंसर लिखोगे, देन यू कैन नेवर अचीव मोर देन 5 और 5.5, वो एक एवरेज बैंड स्कोर होता है, तो उससे ऊपर आपका स्कोर कभी इंक्रीज नहीं होगा। टिप नंबर 5, शो ऑफ योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एक पैरामीटर है आपका। दिस इज द मार्किंग क्राइटेरिया कि आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज को इवैल्यूएट किया जाता है। So examiner did check for wide range of vocabulary. How much vocabulary you are putting in your essay or your letter or your report writing, right? So make sure practice करो कि आप different vocabularies को read करो, English language sources को check out करो, magazines, newspaper, blogs और topic specific vocabulary को read करो। एंड वोकैबुलरी आना इज नॉट कि आपको 100 वर्ड्स आ गए और आपको उनके मीनिंग पता है, आपको उनका राइट कॉन्टेक्स्ट पता होना जरूरी है कि आपको इसको यूज कैसे करना, राइट? स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो व्हाट वर्ड्स आई कैन यूज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है तो व्हाट बेसिक वर्ड्स और व्हाट अनकॉमन वर्ड्स I can use in health part. Clear? Anyone, any doubt still here, please? No, ma'am. Next is No, ma'am. use a mix of sentence structure. Sentence structure is again going to be evaluate in grammatical range and accuracy. आपकी ग्रामर जहाँ पे इवैल्यूएट की जाती है, ग्रामर के सारे सेशंस ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन में अपलोडेड है, यू कैन चेक ऑल। If you still want me to cover any topic, अगर कोई left out है, please let me know. But you can check all your grammar classes. Speaking के sessions में grammar classes already included है। उसमें simple, complex and compound sentence session number 4 है। Have you seen? How many of you have seen that session? Yeah. Yes. Okay, Jyoti has seen. Anyone else? Jasleen also. Okay. तो प्लीज वॉच दैट सेशन अगर आपको कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस देखने हैं कि हाउ टू राइट इट। ओके दीपिका, ठीक है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करो इन योर राइटिंग टास्क टू, ठीक है? सो ट्राई टू सी दैट सेशन अगर किसी ने नहीं देखा, बट डू नॉट यूज मेनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि हर स्टेटमेंट में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बना रहे हो, ऐसा नहीं करना, ओवर यूज नहीं करना। टिप नंबर 7, परफेक्ट योर पंचुएशन। कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमास लगाने हैं, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लगाना है, यू हैव टू यूज द करेक्ट पंचुएशन इन द राइट प्लेस। कहाँ से आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होना है, कहाँ पे आपको कॉमा लगा के एंड लिखना है, करेक्ट पंचुएशन आनी चाहिए आपको, बिकॉज इससे भी आपकी फ्लुएंसी शो होती है कि हाउ गुड योर राइटिंग स्किल्स आर। करेक्ट? सो इफ यू आर नॉट श्योर कि क्या सर्टेन पंचुएशन सिंबल है, तो उसे सिंपल रखो, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत बनाओ, राइट? मेक इट सिंपल, बट डू नॉट मेक इट इनकरेक्ट कि आपके मार्क्स यहाँ पर लूज है। Sometimes students they try to overwrite complex sentences, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिखने की कोशिश करने के चक्कर में लाइक इनकरेक्ट वो पंचुएशन पुट करते हैं, तो वो आपको नहीं करना, क्योंकि पंचुएशन भी आपकी यहाँ पे इवैल्यूएट होती है ग्रामर में। Anyone? Can we write compound sentences? Yes, you can. You can write.
Okay, ma'am. Okay, now next is know when to use formal language. अब your writing is complete formal, तो आपको एक फॉर्मल टोन यहाँ पे मेंटेन करनी है, एक प्रोफेशनल टोन, एक एकेडमिक टोन, बिकॉज यू आर राइटिंग लेटर, यू आर राइटिंग रिपोर्ट और यू आर राइटिंग एन एसे. आप यहाँ पे कोई इनफॉर्मल कोई बात फ्रेंड या फैमिली से नहीं कर रहे हो कि आप मोर कैजुअल टोन यूज करो. नो, दिस इज राइटिंग टास्क. स्पीकिंग में आप इनफॉर्मल टोन यूज कर सकते हो जब आप स्पीकिंग टेस्ट दो या स्पीकिंग में आप आंसर्स दे रहे हो, जब भी यू कैन डू इट, बट दिस इज फॉर्मल. सो नो स्लैंग, नो क्लैशेस, नो कॉन्ट्रैक्शंस, कुछ भी ऐसी चीजें आपको यहाँ पे यूज नहीं करनी. नॉट इवन कॉन्ट्रैक्शंस. सिर्फ इनफॉर्मल लेटर में कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड है, अदरवाइज राइटिंग में कहीं पे भी आपको कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड नहीं है. ओके, मैम कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस मींस कुडंट. आप एन में एपोस्ट्रॉफी और टी लिख देते हो, कुड नॉट नहीं लिखते, कुडंट लिख देते हो, सो दैट इज कॉन्ट्रैक्शंस. आपने वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, और स्लैग? स्लैंग्स इज लाइक कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी बातें लिखना एंड सम काइंड ऑफ घिसी पिटी बातें लिखना, दैट इज स्लैंग. स्लैंग लैंग्वेज. ओके मैम. ठीक है, तो वो सब आपको नहीं यूज कर. एंड क्लिशेस आल्सो मींस द सेम. ठीक है, काइंड ऑफ लाइक कई मुहावरे एंड ऑल, ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी है. So task 1 and task 2 must be answered using formal language. Tip number 9, take some practice tests. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, you won't be able to get your score. Now it's been how many days we are practicing and how many tests you have done? Tell me. How many of you, truly speaking, how many of you are practicing writing task 1 and task 2 also? Ma'am, I'm right. I also practice from this app. Yes, please. If you really want to score good bands or higher bands, make or create your schedule ki yes, you have to study and you have to practice at least one mock test. ठीक है? Ma'am, do we have Ma'am, to in theory, write? Yes, Ranji. हाँ जी, ma'am, do we have to write one essay daily? Yes, it is Because required. If you want to score higher bands, you have to. हाँ, मैम एक्चुअली मेरे yes. प्रॉब्लम आती है कि हाँ, जो न्यू वोकैबुलरी यूज करना और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बड़ी दिक्कत आ रही है. So watch grammar sessions ना. ग्रामर Okay, ma'am. सेशंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल सेंटेंसेस का एक कंप्लीट सेशन है, आप उसको वॉच करो. ग्रामर Okay, ma'am. क्लासेस आप सारी देखो इफ यू वांट टू बी गुड विद योर राइटिंग स्किल्स. Okay, ma'am. ओके. Okay. मैम अपने बेबी कोड पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है क्या? What you're talking about, what is available? मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट. See, mock test, the combined 2 hour 30 minutes का combined test is not there. There are separate tests. Reading mock test, writing के questions आपको already given है वहाँ पे, आप अपना आंसर सबमिट करो, right? टास्क 1 भी है, टास्क 2 भी है, listening के टेस्ट भी है, and speaking का तो you have all. Yes, ma'am. Every test is there. Do one test every day. It's only about 2 hour 45 minutes. So आप 24 hours में से 2 hour 45 minutes नहीं devote कर सकते. Yes, ma'am. मैं करती हूँ मैम डेली Right? टास्क One, 1 एंड and do always with the time frame, under time conditions कि आपको 1 hour में रीडिंग करना है, 1 hour में राइटिंग करना है. If you are at the beginner stage, then you can devote much time. But if you are planning to give exam next month, I would advise you always do under the time frame.
कि आपको 1 आवर में रीडिंग करना है, 1 आवर में राइटिंग करना है. 20 minutes on task 2 and 40 minutes on task 2. Sorry, 20 minutes on task 1 and 40 minutes for task 2. So please practice. These are all updated tests. रोज का आपको रीडिंग एक टेस्ट मिलता है, रोज रीडिंग अपडेट होता है. स्पीकिंग के देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. कंप्लीट स्पीकिंग मॉड्यूल इज देयर. स्पीकिंग का पूरा 15 मिनट्स का टेस्ट है, उसको प्रैक्टिस करो. और राइटिंग का एनी टॉपिक आप टास्क 1 में से पिक करो, देन टास्क 2 पिक करो एंड राइट इट डाउन. ओके, बट प्लीज टेक सम प्रैक्टिस टेस्ट. Create your schedule and start practicing. Without practice, nothing can be done. And we have a study partner, right? A baby code application. You do not need any friend to practice with. You just need to open the application and start practicing. Even for writing, even for speaking, right? मैम जो इसमें राइटिंग में कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज लाइक जैसे वो 7 बैंड और 7.5 बैंड, दैट इज ओके टू लाइक समटाइम्स इफ यू हैव सम डिफिकल्टीज देन आई कैन सी दैट Yes, देयर आर. yes, these are all updated by me. The whole content is Okay. updated by me only. Yes, Okay, ma'am. you can watch. Okay, Baljinder, I'll have a look if reading is not uploaded. Have you completed all the mock tests? Okay, now see, quickly what you have to do, you have to understand the task requirement before you start. Step number 2, analyze the visual information carefully for your task 1, your report writing. Can you hear me? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So some more tips I'm telling you about so that you can increase your score. Quickly understand the task requirement कि क्या task की requirement है, क्या आपकी specific details है, आपको क्या लिखना है. Analyze करो visual information को, that means report writing को, how you're supposed to write. Second, then third one, create a clear and organized plan for your response, whether it is your report writing or it is your essay writing. Begin your essay with a concise and engaging introduction. Introduction is the first step जो examiner read करने वाला है. चाहे आप report writing लिखो or you're writing your essay, it has to be engaging. It has to be clear, है ना? Clear and accurate होना चाहिए. Present an overview in separate paragraphs. So this is now for report writing. सेकेंड पैराग्राफ इज ओवरव्यू. सो हमेशा ओवरव्यू में हम क्या लिखते हैं? मेन हाईलाइटिंग स्टेजेस, ट्रेंड्स, समथिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एनी नोटिसेबल फीचर्स हम कहाँ लिखते हैं? ओवरव्यू में लिखते हैं. डू नॉट मिक्स दैट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन एंड देन ओवरव्यू. सपोर्ट विद स्पेसिफिक डिटेल्स इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ. नाउ अगर आप अपना रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, उसमें जो भी आपके नीचे पैराग्राफ्स हैं, की डिटेल पैरा 1 और पैरा 2, उसमें सारी डिटेल्स दो. नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट सपोज आपका बार ग्राफ या पाई चार्ट, एनी कोई भी पिक्चर है और उसमें 5 कंट्रीज का डेटा मेंशन, लेकिन आपने की डिटेल पैराग्राफ में सिर्फ 4 कंट्रीज के बारे में मेंशन करा और 1 कंट्री को लीव आउट कर दिया. दैट मीन्स आपने की फीचर सारे फुल्ली कवर्ड नहीं करे. So you cannot leave any country. आपको वो write down करना है. Okay, so make your text कि जब आप 150 words लिख रहे हो तो you organize like this कि आप सारा data cover करोगे. You cannot leave any. We have done in the class that older generation and younger generation वाला, right? कि कितने लोग educated हैं और कितने लोग with no qualification है. Step number 7, use language devices and cohesive elements. Now for your overall quality of writing, you have to use discourse marker, but do not overuse it, please. अपने sentences, अपने paragraphs को ऐसे organize करो कि वो आपको clearly overflow of ideas ना दिखे.
logically organized ideas देखें, right? So do not overuse it. Proofread and revise. Once your 25 minutes done, your writing is complete. Now devote some time in reading your essay, revise it, check for the grammar, check for spelling, any punctuation mistakes. Your sentences, your ideas are clear or not? Coherence and cohesion clear hai ki nahi? Kuch bhi you want to add on or something you can, but not after this. Clear? Yes. Yes, ma'am. मैम Yes. Yes, please. फर्स्ट में मैम अपने डेटा स्किप कर सकते हैं? Sorry. Yes, Gagan. Just give me 1 minute. मैम टास्क 1 में अपने डेटा स्किप कर सकते हैं? टास्क 1 में डेटा आप किस में स्किप करोगे?